Hello, Lina ma'am, are you there? Yes sir. Okay. So मैंने आपका वो वायरफ्रेम मैंने देखा. So मैंने आपको फीडबैक भी दिया था कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना है. So हम लोग संडे का क्लास थोड़ा बड़ा रहता है तो उसमें वो चीज एक बार डिस्कस कर लेंगे. Okay sir. Okay, so I'm starting this session. We are still into the audit part. Let me again share my screen. Okay, so yesterday we discussed about backlinking and referring domains. Okay, so I'm just summarizing the thing. Like backlinking means like if any other website is has mentioned our website link in their website, then we call it as a backlink. So referring domain means the domain which gives us the backlink. Okay, say we have 3 websites. Say we have 3 websites and each website gives us 3 backlinks each. So that means my total backlink is 9, but my referring domain is 3. Okay, so this is called referring domains. Okay, then there is another thing called structured snippets. I want to show you the result of structured snippets, like paneer recipe. So I have searched paneer recipe and these things come into the first place. 33 simple paneer recipe. Okay, these are not ads. These are all organic results, that is SEO. But this looks different than the usual results. Also see these top stories. How these things actually comes. So we call it structured snippet or rich snippet. Basically, there are certain tags that we need to implement in our website in order to get this kind of structured snippet or rich snippet. Why we call it rich snippet? Because it gives us a rich result. It is it is a combination of image, headlines, reviews, and description. So this is called a rich result. Okay. Now, if I open this thing, you will see how this thing is coming here. So 33 simple paneer recipe. Okay, so this is the heading. The heading comes here. This is the image. The same image is showing here. Okay. Now I'm going below. See, this is the rating. You can give the rating here and it will come here.
this one. And then there is a short summary of the recipe, like palak paneer, biryani paneer, like this. Okay. So this is also coming from this place. Palak paneer, okay, chili paneer. So whatever it is there in the page, it is actually showing here how it actually comes. So in Google, we can tag or we can highlight some extra data for the ease of the search engine bot. Okay, so basically we are giving an instruction to Google कि ये वाला जो इंफॉर्मेशन है आप इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, ठीक है. So marking, highlighting a certain portion of a content or a certain image in the website, that means we are giving an instruction to Google कि ये जो इमेज है इसको ज्यादा ध्यान दो, ये जो कंटेंट है इसको ज्यादा ध्यान दो, ये वाला चीज को तुमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. So this is how we can highlight some specific content in Google, in my website, which comes like this. वो मेरा रिच स्निपेट या स्ट्रक्चर्ड स्निपेट हो गया. ये थोड़ा एडवांस फीचर है, ये हम लोग जब एसईओ का पूरा अंदर में घुस जाएंगे फिर हम लोग ये सीखेंगे. Anybody has any question, they can ask. Sir, how we will add structure snip to our website? There is a thing called Google Data Highlighter. Okay, so from here you can like tag some specific things in your website. Like, let me show you. So first of all, you have to define what kind of content you want to, like, just let me. So first you have to define what kind of content you want to highlight. So there are certain categories like articles, book reviews, events, this. Okay. So it is a blog site, so that is why I am choosing articles. Okay. Tag just this page. Okay. So here there are certain things in this blog. There are a lot of contents. Okay, there are certain images. Everything is here. Now I want to add some specific thing from this blog, like the title of the blog. That is this one, title. See, the title comes here. Okay. Date published. I also want to add a image for this blog. Say this one. Author. Now I have to add author. Let me check. No, the author section is not visible, so I can add it manually.
See, I can also add a category. Travel. So currently I don't have any ratings and reviews. Okay, so I can't add it here. So this is how I can highlight some specific data from a particular page, from a particular website, from a particular web page. So I have highlighted these things: title, author, date published, image. Okay, now I'm going back to the result again. See, whatever rich results appear here, they have certain features like the title, then the author, this is the rating, and this is a small description. Okay. So though it is a recipe, but I have a blog, let me check one thing. See, so these are all rich results. Okay. So this is how we can use this feature. So how it will help us? It will help us to create some extra information about our website or about our certain content. And while we are giving an extra information to Google, Google will process it accordingly. And it is obvious that when Google have extra information about our site, Google might prioritize our site for the rank. So that is the concept. So is it okay, or you have any further doubt? No, sir. So now it is content readability. Readability is the ease of reading a content. It should be grammatically correct. It should be easy to understand. Okay, the sentence should be smaller, and point-wise sentence is more lucrative for Google. Like I am giving another example for that. Top 10 adventure destinations. See, this is also a result of structured snippet, and also it shows another thing, that is, if we give point-wise content, then it will be easier for Google to rank it in this place. So we call this place rank 0. Okay, this is the rank 0. Okay. We also call it, this kind of content, we call it listicle content. So you can search a lot of things like top 10 things, best way to do workouts, like this. So these are all type of listicle contents. If you use this type of contents like point wise contents, if you represent your contents point wise, then it will get an extra advantage in Google. Not only this, like see, best workouts for belly fat. See, this comes like this.
Another thing is FAQ content. Okay, so if your content consists of questions and answers, questions that people usually ask, then it will also get an extra advantage like this. I'm opening each this is FAQs and we call it accordion menu. So we all know the accordion instrument. So the menu is like that. So once I open any of this menu, two more will comes up in the below. Like see it is increasing. So if you use questions or if you use point-wise things, then it is obviously easy to read. People feel comfortable to read those things. It actually helps them to get the solution or get the answer they are looking for. And it also helps the Google bot to crawl your site and rank accordingly. So these are some of the places like the rank 0 and this FAQ things. Okay, we call it featured snippet. Like this. This is featured snippet. So to activate these things, you have to write your content in this form, and obviously you have to go for the structured snippet option. Then only you will get this feature. Another is duplicate content. Now duplicate content is like if you use the same content in all your pages, or say you have just copy and pasted someone else's content in your website, we call it a duplicate content. There are different tools to check duplicate content. We call it plagiarism checker. So when you write something, say sometimes as a digital marketer, you have to write content. Okay, there are some certain scenarios where a digital marketer has to write content because content is also an integral part of digital marketing. Okay, sometimes while we are doing SEO, a lot of content we have to develop. Even while we are going for a social media post, we have to develop our own content. So content is an important part. Now content should not be duplicate. Like we can't copy and blindly paste it in our website. It is not a good practice at all. Rather, it is a worse practice. It actually, if Google actually finds such thing in your website, it might penalize you. Okay. Also, the company whose content you are using, they might also sue you for using their content if that has some kind of authorization or some kind of trademark. Okay, so it is not at all permissible to use someone else's content, though while we are writing some kind of content on any topic, everything is already available in the internet. So somehow we are actually repeating the same thing, but duplication, like simple copy and paste, will not work. You have to rephrase your content accordingly. If someone, if there is something written like this, the best way to do workout is running in the morning. If this is the if someone in any website, if this is written, then you have to write it in this way. In the morning, running is the best workout. Like this. So you have to rephrase your content so that it don't gives you
the like plagiarism issue. Keyword density. Now, what is keyword density? Any idea? Can anyone say what is keyword density? Anybody else? Just give a try. Just to guess, you don't have to be correct. सर इन स्मॉल यानी थोड़े शब्दों में ज्यादा कुछ कंटेंट देना या ज्यादा कुछ ये करना, मेंशन करना, ऐसा कुछ? No. कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है, कीवर्ड एक मतलब एसईओ के लिए एक बहुत अहम चीज है। कीवर्ड के हिसाब से हम लोग का रैंकिंग चलता है। तो हम लोग का हर एक पेज में कीवर्ड डालना है। तो कीवर्ड तो ऐसा नहीं कि मैं मेरा कीवर्ड, सोचिए आपका मेरा कीवर्ड है एनालिटिक्स ट्रेनिंग। अगर ये मेरा कीवर्ड है, ऐसा तो नहीं मैं पूरा वेबसाइट में सिर्फ एनालिटिक्स ट्रेनिंग करके मतलब लिख के पूरा फुल कर दूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। we have to write some kind of meaningful content like to get a good career you need to enroll in a good in a professional analytics training. So this is a meaningful word, meaningful sentence where I have mentioned the keyword in a very subtle manner. So this is how you have to implement the keyword in your content. Now, if I like in every sentence I start mentioning my keyword, we call it keyword stuffing. Okay. So it will not work. If someone think like if I put all my keywords in a same page and Google will give us the rank, actually it is a myth. It not actually happens like this. So you have to write a meaningful content. Your keyword density means in a certain content, how many keywords you have used. The primary keywords, how many times you have used that primary keyword in your content. That is the density of your keyword. Okay. So say, so the permissible limit is 0.1%. It should not go beyond 0.1% or 0.2%. 0.1% is the permissible limit. Okay. So you have to write your content like this, so that it should not portray like आपने कुछ keyword stuffing कर दिया। फिर जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया, to get a good career you need to enroll in a professional analytics training. Now again I am writing a professional analytics training gives you an insight of how data can be processed in a meaningful manner. And analytics training is good for the students who are from science background. So see, I have written 3 sentences, but in every sentence I have mentioned the keyword. Okay, so this is called keyword stuffing. So I am actually using my keyword more than the permissible limit. Even I'm not going to the SEO के perspective में मैं नहीं जा रहा हूँ. Even as a user, when I'm reading this content, it's a bit repetitive. Every time, every sentence I'm reading, the analytics training is a repetitive thing.
So it is not at all like a good experience for your user. Also, Google will not take it as a SEO technique. So it might gives you a lower rank for this kind of thing. So you need to understand, like whenever you are developing a content, you have to keep your keyword density within 0.1% and not more than that. So this is the keyword density, like how many times you have used your primary keyword in your page. Now the domain authority. The domain authority is every website contains some kind of authority. So authoritative factor, it is actually given by Moz. There is a tool and there is a company also, Moz.com. So this domain authority, actually their brainchild, domain authority and page authority, both their brainchild, and they are actually assigning every website with a certain domain authority. It is a score basically. Okay, the more you have the score, that means the more you have the authority. So domain authority comes with the age of the domain as well as the number of backlinks from some relevant and some renowned websites gives you the domain authority. Okay, say I have one domain which is 5 years old, okay, and I have 3,000 backlinks from different other websites. So my domain authority will go up. Okay, say I have a 5 years old domain, but I don't have any backlinks, or I have only 2-3 backlinks, my domain authority will go down. So domain authority comes with the age of the domain, and the most important is the backlink of how many backlinks the website have. Okay, so domain authority is basically a kind of trust score. Okay, it gives an idea कि मेरा ये जो वेबसाइट है इसका डोमेन ऑथोरिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये बहुत रिनाउंड वेबसाइट है, बहुत अच्छा वेबसाइट है इन टर्म्स ऑफ एसईओ, इन टर्म्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस. ठीक है, सो डोमेन ऑथोरिटी ये एक स्कोर है. ओके, सो देयर आर डिफरेंट, मॉस का भी एक टूल है और देयर आर अदर टूल्स आल्सो टू चेक डोमेन ऑथोरिटी. देयर आर 2 थिंग्स, डोमेन ऑथोरिटी एंड पेज ऑथोरिटी. डोमेन ऑथोरिटी पूरा वेबसाइट का होता है, मतलब moz.com का एक डोमेन ऑथोरिटी होता है, और पेज ऑथोरिटी वेबसाइट के अंदर हर एक सिंगल पेज का अलग अलग पेज ऑथोरिटी होता है. ठीक है, कि कौन सा पेज में कितना बैकलिंक्स है, कौन सा पेज में लाइक कितना ट्रैफिक है, कितना लोग आता है जाता है. सो इसके ऊपर बेस करके पेज ऑथोरिटी बनता है. Okay, so like currently we are in moz.com. This is the home page of moz.com. तो इस डोमेन का एक ऑथोरिटी है, इस पेज का भी एक ऑथोरिटी है. हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं. DA and PA checker. See, the domain authority is 91 and the page authority is 74. Okay, so this is how we actually check domain authority and page authority. There are a lot of tools, you can use any of them. Social media links on website. These are all mainly some kind of low priority. मतलब हम लोग जब ऑडिट करते हैं ये सारा चीज को हम लोग लो प्रायोरिटी में रखते हैं. ऊपर में हम लोग जितना चीज के ऊपर डिस्कशन किया था ये सारा बहुत हाई प्रायोरिटी चीज है, मगर ये नीचे जो ये डोमेन ये जो जितना भी है ये उतना प्रायोरिटी चीज नहीं है. ठीक है, फिर भी मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया लिंक्स ऑन वेबसाइट. कोई भी वेबसाइट में सोशल मीडिया लिंक्स होना चाहिए.
हम किसी भी अच्छा खासा वेबसाइट में अगर विजिट करेंगे तो उसमें हम लोग सोशल मीडिया का लिंक देख पाएंगे. व्हाई? बिकॉज सोशल मीडिया फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ ओमनी चैनल थिंग. ठीक है, क्योंकि मैं एक बार मेरा वेबसाइट में आऊंगा, वेबसाइट से सोशल मीडिया पेज में जाऊंगा, फिर सोशल मीडिया पेज से मेरे वेबसाइट में लौट आऊंगा. सो दिस इज अ ओमनी चैनल कनेक्शन. सो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ मेरा वेबसाइट जुड़ा रहता है. ये एक चीज हो गया. दूसरा चीज ये होता है कि हम लोग फेसबुक या ट्विटर में, मतलब कोई भी सोशल मीडिया में जो कंटेंट डालते हैं वो कंटेंट भी मेरा वेबसाइट, मेरा गूगल में रैंक करता है. सो वी नीड टू इम्प्लीमेंट द सोशल मीडिया विडजेट इन आवर वेबसाइट. आप कोई भी एक अच्छा खासा वेबसाइट का एग्जांपल ले लीजिए. मैं फ्लिपकार्ट बोलता हूँ, सो रिनाउंड थिंग. ये देखिए, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब. ठीक है, इसमें ये है. ऐसे आप कोई भी अच्छा खासा वेबसाइट देख लीजिए, ये वाला चीज आपको मिलेगा. सो दिस इज अ थिंग. देन आपका आ गया ट्रैकिंग कोड्स. ट्रैकिंग कोड्स ये बेसिकली डायरेक्टली एसईओ से रिलेटेड नहीं है, मगर हम लोग जब कोई वेबसाइट का ऑडिट करते हैं तो ये भी एक बार चेक करके देखते हैं. व्हाई? बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट आवर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, हम लोग को सारा चीज ट्रैक करना पड़ता है. हम लोग एक बेस रिपोर्ट बनाते हैं जब काम शुरू करते हैं. उसके पहले बेस रिपोर्ट में क्या रहता है कि मेरा करेंट ट्रैफिक क्या है वेबसाइट में, वेबसाइट का करंट मेट्रिक्स क्या है. नॉट ओनली ट्रैफिक, ट्रैफिक के साथ साथ कितना समय लोग मेरा वेबसाइट में दे रहा है, कितना पेजेस वो लोग देख रहा है, ये सारा चीज हम लोग एक रिपोर्ट बना के रखते हैं. कौन कौन सा कीवर्ड में मेरा रैंकिंग है, ये सारा चीज हम लोग एक रिपोर्ट बना के क्लाइंट को भेज देते हैं. नाउ वी स्टार्ट डूइंग आवर एक्टिविटीज. इससे क्या होता है, हम लोग हर एक मंथ में जब मंथ एंड का रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं तो एक कंपैरिजन करने का कुछ रहता है. सोचिए मैं जब काम शुरू कर रहा हूँ उसमें मेरा ट्रैफिक है 300, मगर एक महीना काम करने के बाद मेरा ट्रैफिक हो गया 400. सो इट इज अ प्रोग्रेस. सो आई कैन शो माय क्लाइंट कि आपका तो पहले 300 ही था, हम लोग एक महीने में 100 ट्रैफिक आपका इंक्रीज कर दिया. ठीक है, ऐसे करके हम लोग का एक बेस रिपोर्ट बनता है. तो अगर आपका कोई ट्रैकिंग कोड्स ही नहीं है वेबसाइट में, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट अ बेसिक रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट आता है मेनली एनालिटिक्स से. ठीक है, कभी कभार फेसबुक, गूगल एड्स में भी अगर उसका एड चलता है तो उसमें भी रहता है. सो अगर उनका ट्रैकिंग कोड्स इंप्लीमेंटेड नहीं है देन ये सारा डेटा उनके पास जाएगा नहीं, ट्रैक नहीं होगा चीज. तो इसीलिए हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं कि ट्रैकिंग कोड्स है या नहीं. So if the tracking code is there, then we will be able to create that report and share it with the client. And based on that report, we will start progressing with our activities. अगर उनके पास कोई tracking mechanism है नहीं, then we have to implement it in the website, ताकि हम लोग क्या कर रहे हैं और उसका क्या प्रोग्रेस हो रहा है वो चीज हम दिखा सकें. बिकॉज मेरा एकदम फास्ट क्लास में मैंने एक चीज मेंशन किया था, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मेजरेबिलिटी. हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो ट्रैकिंग कोड ही नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे. सो दिस इज व्हाई वी हैव टू चेक वेदर द वेबसाइट हैज एनी ट्रैकिंग कोड और नॉट. देन आपका आ गया फेवाइकन. फेवाइकन क्या है? फेवाइकन है ये जो टैब है, टैब के ऊपर मेरा फ्लिपकार्ट का लोगो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फेवाइकन. ये देखिए डीएपीए चेकर के ऊपर भी एक लोगो दिख रहा है, एक मतलब चेन का लोगो है ये.
मैक्सिमम वेबसाइट में ये चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं फैव आइकन। ठीक है, फैव आइकन इट इज बेसिकली द लोगो ऑफ द वेबसाइट। ये एक्चुअली वेबसाइट का आइडेंटिटी है। अगर फैव आइकन नहीं रहेगा तो मेरा प्लेटफॉर्म का जो डिफॉल्ट लोगो है वो दिखा देगा। मेरा अगर वर्डप्रेस का वेबसाइट है तो वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट लोगो होता है वो ग्लोब वाला लोगो है वो दिखा देगा। सो दैट इज अ वेरी लाइक अनप्रोफेशनल काइंड ऑफ थिंग। सो फैव आइकन रहना जरूरी है बिकॉज इट इज द आइडेंटिटी ऑफ माई वेबसाइट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फैव आइकन रहने से या नहीं रहने से, प्रोबेबली आपका एसीओ में बहुत इधर उधर कुछ नहीं हो जाएगा। फिर भी इट इज अ प्रोफेशनल अप्रोच टू डू अ बिजनेस और टू क्रिएट अ वेबसाइट। सो फैव आइकन रहना जरूरी है। एंड देन द कॉन्टैक्ट ऑप्शंस। सो कोई भी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट ऑप्शंस रहना चाहिए ताकि लोग आके कॉन्टैक्ट कर सकें। सो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डू व्हाइल डूइंग द वेबसाइट ऑडिट। अभी मैं एक ऑडिट करके आप लोगों को दिखाऊंगा हाउ टू डू अ ऑडिट। जैसे एक फ्री टूल में मैं दिखाता हूं पहले। कोई भी एक वेबसाइट का नाम बताइए। एम पी पी GCL, ये फर्स्ट आंसर जो आ रहा है। सो इसमें मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा। इस डॉक्यूमेंट में हर एक अलग अलग पैरामीटर्स के लिए अलग अलग टूल्स मेंशन्ड है, मगर मैक्सिमम चीज एक ही टूल से हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूं। डन। अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। इंक्लूड मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, मतलब इसका मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक है। इम्प्लीमेंट XML साइट मैप, इसका साइट मैप नहीं है। robot.txt फाइल नहीं है। कोर वेब वाइटल्स इसमें ऑप्टिमाइज करना है। कैनोनिकल टैग नहीं है, उसको ऐड करना है। H1 हेडर टैग नहीं है। ठीक है। सर्वर रिस्पॉन्स टाइम में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाना है। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर थोड़ा काम करना है। अपडेट लिंक URLs टू बी मोर ह्यूमन एंड सर्च इंजन रीडेबल। देखिए क्या है इसमें। सी what you will understand with this URL. MP Genco install detail. You can't understand anything. Full stop. HOD.html. इसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इसीलिए HOD.html कर दिया है। सो इट शुड बी लाइक मैं एक बार में इसको देख के समझ सकूं कि इसके अंदर क्या है। मुझे इसके अंदर नहीं जाना है, सिर्फ ये URL देख के और ये ऊपर का जो टाइटल डिस्क्रिप्शन है ये देख के मुझे पता चल जाएगा मेरा वेबसाइट के अंदर क्या है। मैं ये भी देख चुका हूँ कि इसका जो मेटा टाइटल है वो भी डिफॉल्ट सेट किया हुआ है। जैसे मैं होम में जाता हूँ तो भी मुझे दिखाता है MP पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। मैं अबाउट अस में
जाता हूं फिर भी ये बोलता है एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। सो मेटा टाइटल इसमें जो मेंशन्ड है दैट इज आल्सो अ डिफॉल्ट, द सेम फॉर ऑल द पेजेस। ठीक है, इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, ऑल्ट एट्रीब्यूट्स टू ऑल इमेजेस नहीं है, इमेज के अंदर ऑल्ट एट्रीब्यूट्स नहीं है। अगर ये इमेज लोड नहीं होगा तो हम लोग को ये पूरा ब्लैंक दिखेगा, कोई टेक्स्ट भी नहीं दिखेगा। इवन ये वाला इमेज इसमें क्या है, ये डैम है या क्या है, ये गूगल को भी पता नहीं चलेगा। फेसबुक पेज का लिंक नहीं है, ट्विटर पेज का लिंक नहीं है। कीवर्ड इंप्लीमेंटेशन नहीं है, इमेज का साइज घटाना है। कोई कीवर्ड नहीं है। सो ये एक ऑडिट करने से मुझे थोड़ा बहुत पता चल गया कि ये वेबसाइट का हाल क्या है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा एडवांस एक टूल मैं दिखाता हूं, एसीएम रश। इसमें कैनोनिकल इशू भी है, अंडर cons.html। ये मेरा होम पेज है, होम पेज का यूआरएल ये है, इसको मैं हटाऊंगा तो भी मेरा यही पेज दिखाएगा। सो मेरा कैनोनिकल इशू है इसमें। अरे यार,
तो ये अभी भी क्रॉल हो रहा है। सो एसीओ में एसीएम रश एक बहुत अच्छा एक टूल है, जहाँ पे हम लोग पूरा एसीओ का जितना भी काम हो सके सारा चीज मैनेज कर सकते हैं इसमें से। ये एक तरह का एनालिटिकल टूल भी है, और इससे हम लोग बहुत काम भी कर सकते हैं, जैसे बैकलिंकिंग का काम कर सकते हैं, डेटा हाईलाइटिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन ट्रैकिंग, कंपटीटर ट्रैकिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कंपटीटर कौन सा कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा है और उस कंपटीटर का रैंक कितना है, ये सारा चीज हम लोग इसमें देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पोजीशन ट्रैकिंग। ओके, बैकलिंक ऑडिट, कीवर्ड मैनेजर, सारा चीज इसमें है, ठीक है। इवन वी कैन डू कंटेंट एनालिसिस, social media marketing, everything we can do from this platform only. The platform is bit costly, but it is worth it. Okay, let it finish. इसको एक बार होने दीजिए, मैं दूसरा चीज एक बार बोलता हूँ। सो ऐसे करके हम लोग ऑडिट करते हैं, ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट हम लोग शेयर करते हैं क्लाइंट के साथ, एंड वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। जो जो चीज उसमें फ्लॉज है, जो भी है, वो अगर डेवलपमेंट एंड का रोल है तो डेवलपर को हम लोग असाइन करते हैं, अगर वो हम लोगों का काम है तो हम लोग उसको ले लेते हैं, जैसे सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, या तो लोडिंग स्पीड ऑफ द वेबसाइट, इंटरएक्टिविटी और स्टेबिलिटी ऑफ द वेबसाइट। अगर इसमें कोई कमियां है, देन वी हैव टू गो टू द डेवलपर। Developer will do the needful to increase the speed of the website as well as the stability. अच्छा, ये देखिए आ गया ये चीज। सो ये 100 पेज क्रॉल किया, फ्री में 100 ही देता है ये। इसमें से 165 एरर्स एंड इतना वार्निंग्स है, ठीक है। साइट हेल्थ है 56%। चार ब्रोकन लिंक है, इसका मतलब 404 पेज है इसमें। एक बार इसको देखते हैं, एरर्स। ये देखिए ये चीज, देखिए पूरा चीज हिंदी में आ गया। Even the title description also is in Hindi. So Google might have some issue crawling this website. इसलिए ऐसे कोड आ गया। इसमें जाते हैं 4 पेजेस।
ये देखिए ये भी एक पेज है। इनवैलिड यूआरएल, ये भी इनवैलिड यूआरएल। तो इसको हम लोग को रिजॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह का जो पेजेस है जिसमें एक्चुअली कोई काम का चीज नहीं है, यूआरएल ब्रोकन है, इसको वेबसाइट से हटाना पड़ेगा या तो इसको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा कोई दूसरा पेज में। इवन वी हैव टू वर्क ऑन द यूआरएल स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट। मैं अगर इस यूआरएल में जाऊंगा, अब देखिए इस यूआरएल में है क्या, क्या समझेगा लोग इसमें। So we have to work on the URL structure also. So any query, any doubt in this? अभी तो नहीं है सर, एक बार स्टडी करके फिर देख के बताऊंगा आपको। आप ACM रश यूज कर सकते हो। ACM रश में 100 से ज्यादा देगा नहीं फ्री टूल में। और एक टूल है जिसको हम बोलते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ये ऐसा टूल नहीं है, ऑनलाइन टूल नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है। आपको इसको फ्री वर्जन मिलता है, आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट आपको देगा एंड इन द फ्री वर्जन यू कैन क्रॉल अप टू 500 यूआरएल्स। ठीक है, इसमें एक एक यूआरएल का पूरा जानकारी आपको मिलेगा। उस यूआरएल में क्या मेटा टाइटल है, क्या डिस्क्रिप्शन है, अगर है तो है, अगर नहीं है वो भी दिखा देगा। इफ देयर इज एनी ब्रोकन लिंक्स वो दिखा देगा। सो एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम दिस टूल। ये 500 देता है। जो आप दो तरह का टूल ही यूज कर सकते हो। सो आई विल गिव यू एन असाइनमेंट, लाइक कोई भी एक वेबसाइट आप ले लो, ठीक है। अगर आपको ये वेबसाइट के ऊपर ही करना है, यू कैन डू दैट। आपको अगर दूसरा कोई वेबसाइट आपका दिमाग पे है, आप उसको भी ले सकते हो। गो फॉर एन ऑडिट एंड शेयर मी अ रिपोर्ट। सो संडे का जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग ये ऑडिट का असाइनमेंट देखेंगे। उसमें क्या और ऐड करना चाहिए या उसका फॉर्मेट ठीक है या नहीं है, वो सारा चीज हम लोग देख लेंगे। ऑडिट सिर्फ टूल से नहीं होता, मैं जो डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा उसमें भी आपको ये दिखाई देगा। बहुत सारा चीज हम लोगों को मैनुअली देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे ईज ऑफ रीडिंग कंटेंट रीडेबिलिटी, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत कंटेंट को देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा 500 पेज का कंटेंट है, सारा पेज को मुझे पढ़ना है, but at least 2-3 pages we have to check to understand the readability the content, okay, कि उसमें मतलब ग्रामेटिकली वो ठीक है या नहीं है, जो टॉपिक है टॉपिक ठीक से हम लोग को समझ मतलब वो एक्सप्लेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा चीज हम लोग को देखना है। सो ये कुछ चीज मैनुअल होता है, तो वो वाला चीज हम लोग को मैनुअली चेक करना है। Pratishtha, Srishti, any doubt you can ask me. What will be the format in which we have to submit our assignment? It will How be a, we'll do? yeah, it will be a simple Excel format like this. Okay, so there will be a serial number, there will be a parameters, and there is a like results. Okay, and remarks. So serial number, parameters, results, remarks. So these are the 4 things you usually add. Okay, so each and every parameter you will give, there will be a result, like say 404 page. Is it there or not there? So yes, no. Okay, if yes, then go to the remarks section and mention like there are 404 page in this website and provide the link. Okay. Now say core web vitals. So there are 3 things in core web vitals, that loading speed, stability, and interactivity.
So in the result, you write whether the core web vitals has been passed or failed. If it is passed, then it is fine. If it is failed, then mention like on which parameter it has failed, like on which parameter we have to do the improvement. Okay, like the timing that it is showing in the dashboard. Canonical issue, whether the canonical issue is there or not. Yes, no. If yes, then on which page? If no, then it's fine. Like this. Okay, sitemap.xml. If अगर है तो yes लिखो, अगर नहीं है तो no लिखो. That's it. इसमें remarks का कोई जगह ही नहीं है. robot.txt. अगर है तो yes, नहीं है तो no. ठीक है, like this. ऐसे करके एक पूरा चीज जाएगा. ये चीज मैं अभी शेयर कर देता हूँ, so that you can start working on it. Okay. Okay, sir. So we can do the web audit, means audit of the websites like Flipkart and such websites. Voice break हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है एक बार. So now, is it audible? सर वो पूछ रही है कि फ्लिपकार्ट साइट का ऑडिट कर सकती है क्या? पेपर साइट. हाँ, फ्लिपकार्ट. फ्लिपकार्ट कर सकते हो, मगर आई डोंट रिकमेंड दैट. बिकॉज क्या होता है, फ्लिपकार्ट बहुत बड़ा ब्रांड है और उसमें सारा चीज तुमको एक्सीलेंट ही मिलेगा. सो बेसिकली नो पैरामीटर्स यू विल गेट टू वर्क. सो वो वाला चीज है. तो थोड़ा अनपॉपुलर साइट करने से मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा. जैसे अभी हम लोग किया वो MP पावर जनरेटिंग कंपनी का. ये बेसिकली गवर्नमेंट साइट है. ये हाई एंड कॉर्पोरेट साइट तो है नहीं, तो इसमें ये लोग उतना अच्छे से काम भी नहीं किया इन टर्म्स ऑफ SEO. सो हम लोग इसमें जो पैरामीटर्स का इश्यूज है हम लोग देख सकते हैं. ठीक है. सो यू गो फॉर एनी अनपॉपुलर साइट, जिस मतलब लोकल बिजनेस का साइट अगर है, वो वाला साइट पे एक बार चेक करो. फ्लिपकार्ट मत करो. फ्लिपकार्ट, अमेजन, नेटफ्लिक्स, ये बहुत मतलब ब्रांडेड साइट्स है. इसका काम चलता है, इसका अलग सा डिजिटल मार्केटिंग का टीम है जो इसके ऊपर काम करता है. सो यू विल नॉट गेट इनफ डेटा और इनफ इश्यूज सो दैट वी कैन डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. तो हमें तो बेसिकली डिस्कस करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. सो वो वाला चीज हमें नहीं मिलेगा उसमें. Okay, sir. Okay. So we are concluding this session here. Thank you, everyone. Thank you, sir. Good night. Thank you. Good night. Good night, sir.